ओके, तो क्या हाल है भाई लोग। आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू हॉगवर्ट्स लेगेसी सीरीज़ के वीडियो में। तो अगर तुम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं स्ट्रीम करूँगा, बट नहीं बन रहा है स्ट्रीम का, बिकॉज लाइक ये गेम ऑलरेडी इतनी हैवी गेम है, अच्छी हाई ग्राफिक पे खेल रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर मैं जब स्ट्रीम करूँगा तो आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लाइक यही सेम क्वालिटी मेरे पे स्ट्रीम पे जाएगी कि नहीं जाएगी। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देखना पड़ेगा मेरे को, या तो मेरे को स्ट्रीम जो है मेरे को 2K पे करनी पड़ेगी तो शायद जाएगी। देखते हैं, सेटअप करते हैं इसका भी, है ना। तो उस सब तब तक के लिए यार लाइक ऐसे खाली भी नहीं रख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो गया यार। तो आज के हम लोग एपिसोड में वापस से मेन मिशन पे फोकस करेंगे। लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने देखी है तो तुम्हें पता होगा कि हम लोग ने, जब मैं पॉपी से मिलने गया था तो वहाँ पे जो है ना, वो क्या नाम उनका यार, श्रेष्ठियल नहीं, वो घोड़े और इंसान आधे घोड़े आधे इंसान, तो वो मिले थे। उसके अलावा मैंने सेबेस्टियन से बात करी थी। तो आज देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं मेन मिशन पे। तो एक बार जरा मैं चेक कर लूँ क्या करें हम लोग। तो मुझे आई थिंक पॉपी से मिलना होगा, वापस से पॉपी से मिलना होगा मुझे। तो आज हम लोग पॉपी से मिलने जाते हैं वापस से केव में। तो चलो यार, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो मैन। चलो, कहाँ है पॉपी? पॉपी पॉपी पॉपी, अरे यार ये तो बहुत दूर है, उड़ के जाना पड़ेगा। Wonder if I'm safe to explore in there. ओके, मैं पहुंच गया हूँ केव के पास। अरे इतना आगे नहीं जाना था भाई। ये कौन सी जगह है यार, ये पूरा एकदम सजा के रखा हुआ है इन्होंने। You made it. ओह, आई थिंक मुझे क्यों लग रहा है कि हमें इसके अंदर कहीं जाना होगा। चलो बात करते हैं पॉपी से एक बार। I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people मधुमक्खियों को देखा avoid. किसी ने? Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Why people avoid the Did cave? you वो पूछ discover लेते हैं। why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. एडवेंचर करने बोल रही है लॉन्डिया। Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. चल भाई चल पॉपी, I देख wonder के if आए you भाई blind क्या from है यहाँ staring पे। directly at a क्रीचर moonstone. एंड अ स्टोन, ये आ रही है या मैं सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ? मूनस्टोन गार्डन, आई थिंक हम लोग पहले जा चुके हैं किसी मूनस्टोन गार्डन में, ऐसा लग तो रहा है मुझे। ओके, ये क्या सीन है भाई? Revelio. या हम You लोग don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Depulso. इधर ही जाना है ना? Revelio. Depulso. Revelio. ओके, आई थिंक उधर से ही जाना है। इधर क्या है? अरे 9 सिक्कों के लिए क्या रो रहा हूँ मैं? मूनस्टोन गार्डन तो तगड़ी जगह लग रही है। Confringo. Depulso. Bovada. What is going on with that? Confringo. ओके, अच्छा ये वाला है सीन है, तो मुझे यहाँ पे जरूरत Revelio. पड़ेगी ल्यूमस की। Lumos. निकाला, और कहाँ डालना है?
अभी के लिए फिलहाल बंद करना पड़ेगा। Confringo. ओके Revelio. ऊपर जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। एक तो ऊपर जाने का भी रास्ता नहीं पता मुझे कैसे जाना है। मुझे उधर जाना है, तो उधर जाने के लिए कुछ तो और सेकेंडरी रास्ता होगा, बिकॉज इन्होंने बना के दिया है यार, ऑब्वियसली होना तो चाहिए। इधर एक बार जाके देखते हैं। ओके तो इधर एक लॉक है, आई थिंक वहां से लूमस निकाल के, हाँ मुझे वही करना पड़ेगा। वही एक तरीका, एक बार अंदर चलना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रुको फिर भी हम लोग एक बार काम करता हूँ मैं, एक बार मैं ये लूमस लेता हूँ। आजा भाई आजा। इसको इधर लाना है, इधर मारते हैं और फिर इसको घुमा देंगे। ओके ओह ये अच्छा हुआ मैं इसको छोड़ के नहीं गया, ये गोल्डन चेस्ट को। बहुत कुछ मिलता है भाई इसके अंदर, 125 आइटम मिला। चलो भाई आगे चलते हैं। पॉपी यही पता नहीं, मून स्टोन तो इतने सारे पड़े हुए हैं, मतलब क्यों यहाँ पे हम लोग आए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। What? ये तो बीस्ट पड़े, बीस्ट है यहाँ पे तो। Vipers. पोशन वगैरह दे रहे हैं। This must be how the rumor about the cave started. The Vipers' song is said to drive anyone who hears it mad. देख लो भाई, सब कुछ ले लिया है ना। Accio. Revelio. Accio. If the moonstone is here and so are Vipers, I wonder if it's being protected. Revelio. ओके आई थिंक नीचे है वो सब सारा सामान। नीचे जाना पड़ेगा। ओ भाई Accio. ओके एक स्टैचू मिला है अपने को। Surprised. First the Vipers and now this. Lumos. ये लूमस लिया, उधर मारा, और क्या है? Revelio. और भी कुछ है क्या यहाँ पे? लग तो रहा है पर पीछे रह गए क्या सामान मेरे बाप? कुछ छोड़ के तो नहीं आ रहा हूँ ना? पता नहीं, ऐसा लग तो रहा है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। देखते आओ। और मैं भी छोड़ना तो नहीं है किसी चीज को, छोड़ना तो नहीं है किसी भी चीज को। Revelio. आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने परफेक्ट सब कुछ कर लिया है। अब एक बार जरा We need to find moths for those spinners. ओके तो मैं भी यहाँ पे और एक कुछ तो है। Accio. यहीं पे होगी ये, यहाँ तो नहीं। एक सेकेंड, इसमें ये साइन है तो मुझे खोलना कौन सा है? एक सेकंड।
ओके, एक ये वाला खोलना है मुझे और दूसरा ये Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the ये moths. रहा। Lumos. Lumos. अब इसको एक बार रोटेट करेंगे। चलो खुल गया। ओ भाई Revelio. Obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Accio. कुछ नहीं है। Revelio. Lumos. ओके ऐसे लाना है। Lumos. अरे आजा भाई, आ गया। Accio. Capolso. ओ यहाँ पे एक वो है, मेरे को ये देखना पड़ेगा एक बार डाइव लगा के। मेरे को देखना पड़ेगा एक बार डाइव लगा के, थोड़ा सा रिसर्च तो करें कि हम लोग अभी है कहाँ पे। होली शिट मैन, Revelio. हम लोग है कहाँ पे? पोशन वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लगा यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग जगह तो होगी है, और लग भी रही है इंटरेस्टिंग। अब Capolso. ओके, इन्होंने देख लिया। Glacius. Levioso. Arresto momentum. Defendo. मैं तो कोई अलग ही दुनिया में आ गया। आजा भाई, आजा पपी। Revelio. आए हैं तो सब लेके जाएंगे, मेरा तो यही सीन है भाई। अब इधर आया ही नहीं तो खोल के जाऊंगा ना मैं, सब कुछ इस्तेमाल करके। Revelio. Accio. Revelio. Merlin, it's beautiful. Accio. Depulso. Revelio. Lumos. 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 ओह शिट, मेरा माइक ऑफ था यार, फक मैन।
मैं बोल रहा हूँ मेरे को ये सब करना था, वो मेरे को देख लिया, मैंने कर लिया। आजा भाई पॉपी। You did it. यस आई डिड इट, कम। Revelio. ओह ये तभी नहीं आ रही है। आओ जरा इनको वो यूज करते हैं। Imperio. Lumos. Accio. Levioso. Defendo. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Confringo. जरा यहाँ भी जाके देखें। ये इतने मजेदार चेस्ट Revelio. होते हैं यार, पता नहीं कि लूट इतनी अच्छी लूट नहीं है यहाँ पे। Whatever, अब जब आ ही गए हैं गाना तो पड़ेगा ही। Where the water's bubbling. How odd. ओके वहाँ से हमें Should we take a एग्जिट closer लेना look? होगा You read my mind. और मे बी वहीं से घुसना होगा हमें। ओके टाइप करते हैं एक बार जरा। ओह ये क्या डरावनी जगह ले आए हैं भाई। ओह ओपन एरिया है क्योंकि ये साले हाँप मत मेरे मुंह के पास। Revelio. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. तो चढ़ेंगे कैसे? आई थिंक इधर कहीं से हो गया। Confringo. Given what Fwoopas are known to Revelio. do, I never thought कुछ I'd तो be so होना happy चाहिए ना to यहाँ see पे this भी many और। of them. I don't know. I've been listening to them for a while. Lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which Ooh, means हम लोग we're पहुंच one गए। step ahead of them. स्कॉलर मूनस्टोन मिला है। अब मेरे को जरा इस पॉपी से बात करनी है। ओके Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. I need to explore before we leave. I'm ready to leave now. I think I'd like to look around a bit first. I suppose we could spare a moment. Very well. Yes. We should leave Revelio. soon. The longer we stay, the more I want a Fwooper. ओके तो यहाँ पे है ये मेरे को जरा चेक करना है। वहाँ पे कुछ तो होगा ना, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार। इतनी दूर आए हैं हम लोग, कुछ तो होगा। एक बार मेरे को ना जरा वहाँ इस तरफ की ओर एक बार चेक करने का मन है। yes. Revelio. ओके मैं यहीं से तो एंटर किया मैंने। ओके 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 नहीं मैंने यहाँ से नहीं, मैंने यहाँ से एंटर किया। आई थिंक हमें मेरे को लीव कर देना चाहिए कॉज लाइक मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो तो मैंने उठा ही लिया। तो जाता हूँ मैं जल्दी से पॉपी के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और फिर मैं यहाँ को छोड़ता हूँ मैं। यही एक तरीका है और कोई तरीका तो नहीं। पर चढ़ सकता हूँ मैं यहाँ से? नहीं ना। ये गेम ना बड़े सोच समझ के बनाई है डेवलपर्स ने। ये बंदा मतलब पूरा गोल गोल चक्कर काटे तब यहाँ पे चढ़ सकता है। चलो लीव करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पॉपी को बात करते हैं। From the outside, you'd never guess this place even existed in here. I have a feeling that was the idea. Are you finished exploring? Yeah, I'm finished. I believe I am. Good. If we leave for the henge now, we should make it by nightfall. We still have the poachers to contend with. Okay. पोचर्स से हमें पंगे लेने होंगे अब। आई थिंक मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया मे बी। और कुछ That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge.
Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. ओ आई थिंक हमारा कुछ नया खुल गया। ये क्या मिला? अच्छा लेजेंडरी मून क्लैप। ओ ओके, तो हमने जो वहाँ पे मून स्टोन लगाया, तो यहाँ पे जो लेजेंडरी बीस्ट है, मतलब जो बीस्ट है मोस्टली, वो वापस आ गए। ओह ओके, वेल आई सी नाउ। That was a mooncalf dance. Do you That's a know how mooncalf rare it dance is to though. see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met High Wing, actually You seem hesitant. You hasn't tell me. If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Oh, ये poachers के family से आती है. How awful for you. I can't believe you didn't tell me. Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. बंदी तो बहुत दिल की है. You can't save all of them. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to Girlfriend talk वाली about हरकतें it क्यों with. कर रही है ये? Do your parents know about the Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. What was like growing up with poachers? एक बार जरा पूछें भी. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Okay. Do you worry about recognized by the poachers? We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized?
Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Thanks you for the trusting me. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Okay, collect the moonstone. Okay, और क्या करना है मुझे? Poppy से बात Are करनी you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. I'm ready to leave. Agreed. I'm ready to leave if you are. Okay. And I think हमारा ये मिशन कंप्लीट हो गया. क्या हम लोग सीधा अभी हम लोग हॉगवर्ट्स आ गए. ओके, द क्रीचर एंड द स्टोन हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके ओके ओके. ओह दैट्स नाइस. अब कोई नया मिशन खुला है हमारा. एक ही मिशन है हमारे पास अब कि एक बार नैटी से बात करनी है और हमें ऐशवंडर के हाइडआउट्स जाना होगा. तो मैं सोच रहा हूँ एक बार नैटी से ही अब बात कर ही लेते हैं. अब जब कर दिया है शुरू तो कर देते हैं और फिर ख़त्म करते हैं जल्दी से. तो मैं गाइस जल्दी से जाता हूँ नैटी के पास. कहाँ है नैटी? इधर कहीं है ना. ओके, नैटी से बात करता हूँ. हम लोग फिर ऐशवंडर के कैंप जाएंगे. वहाँ पे जल्दी से उनको लोगों को मार के आई थिंक किसी को रेस्क्यू करना होगा मे बी. एंड उसके बाद हम लोग फिर ये एपिसोड ख़त्म करेंगे. ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है ये एपिसोड आई नो, बट स्टिल यार मज़े तो आ रहे हैं. और क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन करके रखा हुआ है. बट बच्चे नहीं है, खाने पीना नहीं है कुछ भी. तो वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे. ओके. I have been meaning to speak with you. ओके शिट मैन, बहुत सही लग रहा है. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Okay, अच्छा. She's supposed to be proud of you. Yeah. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Okay, how is your mother doing? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Are you looking for
To average his death or what? Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Okay. What would your father think? Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Okay. खत्म? बस इतना ही था? यार ये तो बहुत ही छोटा था। ये तो असल में काफी छोटा था। Whatever. जरा हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे और इधर का व्यू लेते हुए ख़त्म करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड मैन। ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं था, ज़्यादा बीच बीच में मेरा माइक बंद हो जा रहा था, तो उस वजह से भी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया। मैं बोल रहा था असल में, बट माइक रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर फिर भी लाइक यार गेम प्ले तुमने देखा, अच्छा ही लगा होगा, है ना। ऐसे ही हम लोग स्टोरी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसे सारे साइड मिशंस जितने भी आ रहे हैं वो सब कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। मैं मेन मिशन पे भी फोकस कर रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा साइड मिशंस पे भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली लाइक एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर स्टोरी समझते हुए खेल रहा हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें ये गेम को ख़त्म करने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड मैन। ये एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।